अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन अपडेट। बिटकॉइन करंटली 94,000 के करीब करंटली ट्रेड हो रहा है। एंड इफ़ यू रिमेंबर आवर वीडियो ऑन फ्राइडे, मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ थी, आई टोल्ड यू मार्केट कुड बाउंस बैक, और मैंने आपके साथ अपसाइड टारगेट मीट किए। आई होप आपकी ट्रेड 100% सक्सेसफुल हुई हो एंड मार्केट ने उन्हीं एरियाज से रिजेक्शन ली और मार्केट ने उन्हीं एरियाज को रीटेस्ट किया जो मैंने आपके साथ मार्क कराए थे। तो अगेन अगर आपने शॉर्ट खोले हैं तो आई होप कि आपके डाउन साइड के, क्योंकि मैंने बताया था उस वक्त एट दैट टाइम के मार्केट वुड बी बेयरिश ऑन द वीकेंड, राइट। तो ये वाले लेवल्स वुड कम इनटू प्ले। सो आई होप आपकी अपसाइड की भी ट्रेड 100% करेक्ट हुई हो एंड आई एम होपिंग फॉर कि आपकी डाउन साइड की भी जो ट्रेड है वो 100% करेक्ट हुई है। अब इस वीडियो में वी गोना टेक अ लुक एट दीज लेवल्स ऑल ओवर अगेन। क्या ये जो सर्टेन लेवल्स मैंने आपके साथ मार्क किए हैं ये स्टिल वैलिड है, और वी गोना टेक अ लुक एट सम अदर थिंग्स एज वेल, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग है बिटकॉइन की, विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एज वेल। सो वी गोना टेक अ लुक एट दैट। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि मैं जो आपके साथ ये नेक्स्ट लेवल मार्क कर सकूँ वो आप उसकी बेसिस पे, अगर आपने ट्रेड लेनी है दैट्स टोटली अप टू यू, आप उसकी बेसिस पे ट्रेड ले। बस सो फार सिंस December 24th, the day when we created this channel, उस दिन से हमारी ट्रेड 100% एक्यूरेट हुई हैं। 4 आवर्स की ये जो कैंडल है करंटली इसके क्लोज होने में रफली अबाउट 1 hour 15 minutes बाकी हैं, सो वी डोंट नो एग्जैक्टली ये कैंडल कहाँ क्लोज होगी और वेदर दीज सपोर्ट लेवल आर स्टिल intact. So that's something we're going to take a look at shortly. But before we are going to look at BTC dominance, USDT की और altcoins को, we're going to take a look at certain areas जो हम हर वीडियो में देखते हैं which are very important for us to look at. We're going to take a look at those areas first before we're going to do our टेक्निकल एनालिसिस। सो हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की लिक्विडेशन से। बिटकॉइन करंटली मसरूफ़ है लॉन्ग को लिक्विडेट करने में ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम की बेसिस पे, और 24 आवर्स की पिक्चर पे देखें तो रफली अबाउट $135 million गॉट लिक्विडेटेड, ऑफ विच biggest chunk is long, people who have opened up a long, right? So $105 million roughly liquidate हुआ है long से, और बेस द सिंगल लार्जेस्ट लिक्विडेशन हैपन इज ऑन बाइनेंस BTC USDT की पेयर में ऑफ अबाउट $8 million एंड चेंज। ये रियल टाइम लिक्विडेशन है विच कैन शोज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गेटिंग लिक्विडेटेड। ये रेड वाले हैं आर पीपल हु हैव ओपन अप शॉर्ट, ग्रीन वाले पीपल हु हैव ओपन अप लॉन्ग, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल फॉर यू गाइस टू कीप एन आई आउट। लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ आते हैं। So on a daily time frame पे if you were to see, right, अगर if you can see कि in my previous video I told you guys, right, कि this is a food और market जो है वो एक fish है. So basically what happened is if the food is on the top side, market would go up. If the food is on the downside, market would go down, right? So the brightest yellow line, which is where the biggest chunk of liquidation is on the upside. Downside पे भी हैं up until the level of 91,000, लेकिन market में upside पर ज़्यादा liquidity है. Next we're gonna take a look at 1 week time frame पे, ताकि हमें bigger picture पता चल सके liquidation की. So on a bigger time frame, 1 week pay, as you can see, right, the biggest liquidation is on the upside. These are for the people who have opened up short. और यहाँ पे roughly about $500 million here, 400 something million here, another 400 and change, and biggest chunk is on the upside, right? Downside पे भी हमारे पास liquidity of about 300 $400 million on the downside as well, up until $90,000. यहाँ पर smaller amount of the liquidity, which is something market's not going to go down to this level at this stage, right? That's something I'm going to share it with you guys. I'm going to do a bit of analysis ताकि I'm going to share it with you guys कि आप market किस level तक जा सकती है. But the biggest chunk of the liquidity downside पे है up until 90,000 and upside पे up until $98,000 पर. क्रिप्टो बबल को देखते हैं. सो इफ यू कैन टेक अ लुक एट द डेली टाइम फ्रेम पे की बेसिस पे, मोस्ट ऑफ द कॉइंस आर, इनफैक्ट ऑल द कॉइंस आर इन रेड. वर्चुअल ने सबसे ज़्यादा ब्लीड किया है ऑफ अबाउट 12%, एंड AI16Z जो कि एक AI का कॉइन है इस ब्लीडिंग हॉरिबली. अब रफली अबाउट 15% ड्रॉप मार्केट में आया है क्योंकि द मार्केट इज गोइंग डाउन, विच मीन्स ऑल कॉइन्स आर ब्लीडिंग. But there are exception as well. KCS जो कि 5% still day time की basis पे pump हुआ है, XMR and HEX as well. So some of the coins, बहुत कम coins pump हुए हैं, लेकिन most of the coins are in red.
नेक्स्ट अप हम मार्केट के नेट इनफ्लो को देखेंगे. सो एज यू कैन सी राइट, यूएसडीटी से change आया है. So the money went into all these coins, Apex, ADA, uh, Shiba, WIF, and the biggest chunk went into Sol of about $18 million, which is the reason why ये line जो है thick है. BTC में भी roughly about $15 million आया है from various multiple coin और various multiple fiat currency से. Ethereum में roughly about 17.5 million आया as well, जिससे further money inflow हुई है into Sol as well. So these are something very important for us to take a look at, ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट में पैसा कहाँ जा रहा है. नेक्स्ट अप इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हैं. तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वी हैव टू मेजर न्यूज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम यूएस मार्केट. ट्यूसडे को पीपीआई का डेटा आ रहा है, and on Wednesday we have our core CPI data as well. उस वक्त तक market could be volatile as well, so that's something I would always recommend you guys to keep an eye out, ताकि you guys would have understanding कि market किस तरीके से किस तरफ जा रही है. So market could be volatile up until Wednesday, और Thursday को हमारे पास initial jobless claims भी आएंगे for the month of December. So these 3 days in the next weeks are very crucial. You guys can create an alert, ताकि आप अलर्ट लगा सकते हैं, आपको पता चल जाए कि मार्केट में क्या होने वाला है नेक्स्ट अप, एंड यू आर फर्स्ट पर्सन टू नो. ये अगर न्यूज़ बुलिश आती है तो मार्केट could go up based on these news, and we're gonna see some crucial levels as well, which is something I'm gonna discuss next with you guys. कमिंग बैक टू BTC एनालिसिस, एज यू कैन सी इसमें विक लग गई है, तो जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती वी डोंट हैव द फुल पिक्चर मार्केट कहाँ पे आके रुकेगी और किस लेवल पे आके ठहरेगी. बट सो फार $94,000 इज सपोर्ट इज़ वेरी क्रूशल, जो कि मार्केट फॉर द लास्ट 4-5 डेज से इस लेवल को मेंटेन कर रही है सो फार. सो लेट्स सी वेयर दिस गाय इज गोना गेट क्लोज एट. BTC की डोमिनेंस को देखते हैं. सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आई एम गोना स्विच बैक टू डेली टाइम फ्रेम की बेसिस पे. सो एज यू कैन सी राइट, BTC की डोमिनेंस, BTC ने इफ आई वर टू गो बैक, BTC डोमिनेंस वाज क्रिएटिंग अ राइजिंग वेज पैटर्न, जिसको मार्केट ने जाके डाउन साइड पे ब्रेकआउट दिया, फिर उसको वहीं से बाउंस बैक किया. और अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा खींच लूँ फॉर दी फ्यूचर, तो आगे की तरफ, तो यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाके इसको रीटेस्ट किया और वहीं से बाउंस बैक किया. और एज यू कैन सी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न करंटली क्रिएट हो रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर. सो दिस कुड गो अप in the next couple for the next couple of days as well. BTC की dominance बढ़ सकती है, which is the reason why you could see some dump in the altcoin as well. लेकिन eventually after next couple of days up until next week or so, this would go eventually go down, and it would go down to some crazy level as well. So it would go down to these levels, which is something I had discussed with you guys in the past as well. Or us what altcoins would go crazy, they would get pumped like crazy. So that's something you would eventually see in the next couple of months in the market. अगर आपने मेरे ऑल्ट कॉइन्स की वीडियो नहीं देखी, आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू गो अहेड एंड वॉच द ऑल्ट कॉइन वीडियो, ताकि आपको ये लेवल पता चल सके. यूएसडीटी की डोमिनेंस की तरफ आते हैं. सो वी कैन टेक अ लुक एट यूएसडीटी की डोमिनेंस को. एज यू कैन सी यूएसडीटी की डोमिनेंस ने लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ एरिया मार्क किया था, वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली है. यहाँ पर ट्रिपल क्वाड्रिपल टॉप बना है, एंड मार्केट ने वहीं से जाके रिजेक्शन ली है. मार्केट ने एक बेयर फ्लैग बना दिया था, और उसके बाद दिस वुड गो दिस वुड गो डाउन राइट. तो मार्केट में मोर मनी वुड फ्लो इन to here as well. लेकिन उसके लिए we're going to take a look at others की dominance को. So other की dominance को if we are to analyze right, other की dominance इस पैटर्न पे बेसिकली हो रही है फॉर्म. मार्केट ने इस एरिया से सपोर्ट ली, इसको ब्रेकआउट दिया फ्रॉम द डाउन साइड. इस लेवल से मार्केट ने बेसिकली रिजेक्शन ली और अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया, जिसको जाके मार्केट ने नेक्स्ट अप इस लेवल से रिजेक्ट किया. डाउन साइड नीचे की तरफ गई, दोबारा से रीटेस्ट किया, फिर अप साइड की तरफ आई, और करंटली डाउन साइड के इस ट्रेंड को, जो कि मैंने आपके साथ सपोर्ट एरिया मार्क किया हुआ था, उसको रीटेस्ट कर रही है currently. So whether the market is gonna bounce back or something is something we're gonna take a look at. Next हम आते हैं टोटल की तरफ. So if you were to see
total side, yeah, I can see a bullish flag already, which is something I've already created for you guys, right? So you guys could see market is going up, so market is gonna go. So यहाँ से basically इसी channel को market ने retest किया, वहीं से जाके rejection ली, और currently market is coming down at this level. लेकिन अगर मैं आपके साथ जैसे ही ये mark होता है, I could मैं इसका target बनाऊं आपके साथ. So as you can see, right, market is going to go up to this level eventually 4.96, so closer to 5 trillion dollar की market की तरफ. So you're gonna see a huge pump in the market, right? But you gotta hang in there ताकि you guys would eventually know. अगर हम पास में भी देखें तो market ने bleed किया था at this level, so market was going down, और eventually इस level से हम rejection देखें. I didn't create the trend line, but that's something I can easily create it with you guys, right? So roughly जब market ने इस area को rejection ली इस area से, so ये हमारी ट्रेंड लाइन है. मार्केट ने जब रिजेक्शन ली तो मार्केट पंप रफली अबाउट, if I were to go all the way up, so roughly about 66% की मार्केट ने पंप लिया था at that time. अगर मैं supposedly same levels में यहाँ से मार्क करता हूँ कि market would come down to this 3.2 whatever level, 3.18, let's say market bleed a bit and eventually down. So market अगर हम similar pump देखते हैं तो a similar pump in the market of about 4.67 जो कि trend line को भी confirm करता है जी, which is something I had created with you guys last time, I think about 2 weeks ago. ये मैंने आपके साथ trend line को confirm बनाई थी ताकि उसी को confirm करता है the trend is gonna be on the upside as well at this level. Total 2 की तरफ आते हैं. So another pattern हम bull flag यहाँ देख रहे हैं. मार्केट बेसिकली इस चैनल में इनफैक्ट रादर इस चैनल में ट्रेड हो रही थी, विच इज़ व्हाट वी आर सीइंग ऑन दिस साइड. डाउन साइड पे भी हम सिमिलर चैनल देखते हैं. इफ़ आई वर टू गो बैक इनटू द हिस्ट्री एज वेल, क्या मैंने कोई चार्ट बनाया हुआ है on the other side so I could explain it to you more better. लेकिन it's similar chart what I just showed it to you, right? मार्केट ने यहाँ से जो रिजेक्शन ली, market came down a bit, which is exactly what's happening at the moment. कि मार्केट यही वाला चैनल इस वक्त करंटली बना रही है. और if we were to count a similar pump, right, everything is pointing into the same direction. So roughly we saw what 73% का हमें gain मिला था. So even though on a shorter time period पे basically even if the market is gonna bleed out, हमारे पास लॉन्ग टर्म पे मार्केट इज गोना गो अप. लेट्स से अगर इसी चैनल से मार्केट रीटेस्ट करती है कि इस लेवल तक आके गिरती है, is eventually going to come up to $1.91 trillion as well, right? But to do that, we're going to take a look at the S&P 500, right? Because I know the reason why market is bleeding, but I'm going to show it to you guys shortly. But at the same time, I wanted to share it with you that market currently is bullish, right? So minute ये सारे pattern, the minute ये सारे channels break out होते हैं, market is going to go crazy. So all you got to do is hang in for another 2 weeks. Trust me, this is going to go bullish. Others की तरफ आते हैं. So we're going to talk about others as well. So others पे we have done ton of analysis at that time. I'm going to get rid of this guy. So basically, if you were to look at the history as well, market में let me go back. Market में basically एक channel form हो रहा था, which I can extend to this level as well. उसके बाद हमें 182% का pump मिलेगा. मार्केट ने इस एरिया पे एक बुल फ्लैग बनाया दैट वाज और वो तकरीबन गए $365 बिलियन पे. वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली तो इट केम डाउन टू लोवेस्ट लेवल ऑफ $150 बिलियन. उसके बाद मार्केट गेव अस अ ह्यूज पम्प ऑफ अबाउट 158 बिलियन 158% का, एंड मार्केट वैन अप टू द क्रेजी ऑफ 449 $450 के करीब, राइट? Currently market उन्हीं patterns पे चल रही है. Market is taking a rejection. Market did go up to this level, but it's coming down and it's coming down hard as well, right? अगर मैं इसी channel को continue करता हूँ, so market could go down to these level as well of about $309 billion. लेकिन अगर हमें वहाँ से pump मिलता है, similar pump if we are expecting from here, let's suppose ये वाले हमारे level बनते हैं,
So see, right, market is going to be crazy bullish. This would go up eventually, which means what? Most of the altcoins is going to pump crazy. So this is something you would see eventually. Uh, in 2 months' time, we are going to be talking about totally different patterns, totally different crazy numbers. ये सारे coins that you are seeing at the moment, they would go 3x, 4x, 2x easily. Some of the coins, like for example AI, they would go 10x, 20x. So these are crazy pumps, which is something we are expecting from the market as well. Now we're gonna go back to BTC, but before that, it's important. जैसे मैंने आपको बताया था, S&P 500 की correlation with BTC is very crucial as well, right? So this is something we have to keep an eye out कि market में हो क्या जा रहा है. So currently, as you can see, weekend पे market has been red, right? Which is the reason why BTC is bearish at the moment. क्योंकि सारा जो पैसा है वो मार्केट से निकलता जा रहा है बिकॉज ऑफ मेजर न्यूज़, बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर. यूएस जो करंटली फेस कर रहा है, यूएस की मार्केट विच इज समथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट इन आवर प्रीवियस वीडियो एज वेल. सो ये वाली कैंडल जस्ट क्लोज, अनदर कैंडल इज बीइंग फॉर्म. आई थिंक हमारी डेली क्लोजिंग हो चुकी है ऑलरेडी based on what I could see on the S500, right? So market एक ये राइजिंग वेज पैटर्न बना रही थी जिसने मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया. उसके बाद इसको रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ने इसी को रीटेस्ट किया और हमें एक ब्रेक डाउन दिया और करंटली डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ है एट द मोमेंट. Going back to BTC USDT chart पे, so first we're gonna take a look at is the daily candle. So daily candle still close on a of about 59 minutes. But I'm gonna go into the weekly candle as well. And in fact, this chart is not cleaner, right? So what I'm gonna do, I'm gonna go into some other chart just पे मैं आपको दिखा सकूँ the weekly candle so you guys could see it, right? The weekly candle, and then we're gonna come back to the chart. मैं इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ so you guys can see. I'm gonna get rid of all these drawings as well. So as you can see, हमारे पास जो rejection आई है, that rejection came hard. So हमारे पास जो हाई लगा था इस वीक में, that was about $103,000 का, roughly a low लगा था of about $91,000, और मार्केट ने उसी एरिया पे है करंटली जो मैंने आपके साथ सपोर्ट मार्क की थी ऑफ $94,000 पे. सो करंटली अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जब भी हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल बनी है, which is apparently I cannot show into this chart, right? So I'm going to switch back to this guy for a bit. जब भी हमारे पास इस टाइप की कैंडल बनी है, if you were to go back into the history as well, so something similar, right? The candle hasn't closed yet, लेकिन आप देखें तो it's followed by a bullish candle as well. So this is the opening candle. I'm gonna keep an eye out. But like I said, based on S&P 500 on the shorter time period की basis पे, I can confirmly say to you guys कि market जो है shorter period के लिए for a day or two up until Tuesday morning, जब तक हमारे पास डेटा नहीं आ जाता CPI and PPI का. I think the CPI data is coming on Wednesday and the PPI core PPI is coming on Tuesday, right? So up until Tuesday तक market is going to be bearish और उसी channel में trade होगी जो the channel I had showed you guys on the channels that we have discussed, क्योंकि हम shorter time period की तरफ देखेंगे. Coming back to the daily time frame की basis पे, so yeah, market उसी channel उसी pattern में form हो रही है, which clearly tell me कि ये level are so far still valid. ये support is still valid, these levels. So I'm gonna get rid of these two guys. This is not gonna go up to these levels based on what I can think, based on the technical analysis or based on what I can see in the market, right? So market की जो वो हैं, which I'm gonna show to you the reason why I can tell, क्योंकि what happened, right? When we were talking about this pattern, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि where how market is behaving at that time. जब हमने यहाँ छोड़ा था तो market went down to this level और उसके बाद our next move was lower high, lower low and lower high, right, compared to the previous high that we saw, right, lower high. So इसकी reason की वजह से market is bearish, slightly
higher high and slightly higher low, right? So which is what we saw कि इस high से हमारा high है और इस low से हमारा जो low है वो ऊपर की तरफ है. Then market went down, right? तो जो हमारा low है वो इस level को भी currently cross कर चुका है, which is the reason why you are seeing all these rejection. Market went down to these level as well, right? Currently, so market did go up, लेकिन मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन ली और market is currently going upwards right at the moment, लेकिन market would come down eventually. And let me switch it back to 4 hours time frame and I'm gonna get rid of this guy, right? क्योंकि 4 hour time frame की basis पे हमने ये pattern form किया था, right? Which kind of shows exactly. So I'm gonna zoom in for a bit so you guys could see it, right? So based on the patterns that I'm still seeing in the market में ये वाली support और ये वाले जो level हैं ये these are strong. Next up market could go down to these levels providing हमारी closing इससे नीचे होती है. It's roughly about up until here. This level would come into play, and if the market is gonna bounce back, market is gonna go up to this level, and the next level would be this guy. So we still have 54 minutes to confirm our closing. Agar market यहाँ से bounce back करती है, the higher is gonna go is up until this level, maybe up until this level as well, but it's not gonna go up to some these levels, which is something I had previously marked. The highest is gonna go is this level. So currently these levels are still intact. और ये level के अंदर currently market, this whole area, right, is where the market is going to go at. Market is currently bearish. इस level से जैसे ही confirmation हमारे पास आएगी, market would come down to this level. अगर supposedly market इस level पे close होती है इस candle की body के end तक, market is still gonna come down to this level. और जैसे ही हमारे पास 4 hours की अगर कोई सी भी candle close होती है, based on the patterns or based on other things, market could come down to this level. Lekin market is not going to go down to this level at all. Market would still maintain this level of support. Agar ye level come into play, these levels are going to perform a crucial support at this level, जो कि market में multiple time हमने test किया and so far is been intact, right? So these levels are clean intact. उसके बाद अगर मैं EMA 50 और EMA 200 की levels देखता हूँ on a shorter time frame की basis पे, as you can see that cross already हो चुका है market में और market is currently bearish. लेकिन this is the key level support. अगर ये level support हमारा maintain होता है तो market is gonna be hovering around at this level up until tomorrow or tomorrow morning पे मैं I'm gonna make another video ताकि मैं आपको next level mark कर सकूँ based on market behavior. But so far the way I see market is bearish for the next day up until tomorrow, because S&P 500 कल हम we're gonna take a look at S&P 500 की basis पे कि क्या pattern, क्या chart और क्या time frame पे हमें क्या दिख रहा है. We're gonna analyze it and then next up we're gonna analyze the BTC based off that ताकि मैं आपको next move mark करा सकूँ. So thank you so much for watching, and once again if you haven't hit the subscribe button, go ahead and hit the subscribe button, and also let me know in the comment below कि आपकी trade कैसी जा रही है based on the level that I have told you so far from December 24th up until this level ताकि आपकी trade 100% correct हो. I hope to see you soon. Thank you. Allah.